I think improvisation is one of the key skill to have a great spontaneous communication. You can improvise in your normal life as well. Normally you can improvise and talk to people and communicate to people. 85% of your organizational level success come from well-developed soft skills. ज़रूरी चीज़ों को ना ज़रूरी समझना बहुत ज़रूरी है. I think one of the biggest flaw in the corporate sector I've seen in my last 12 years कि हमने ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझा. So I want you guys to understand, if you want to transform your communication, if you want to accelerate your communication, and you want to create a difference in your communication, you need to change the deed right. Been a part of many trainings. I've been part of some sort of further other sessions as well. I took I recently got into a business trip as well. And this sort of training has actually helped me to rethink about so many things, that what is lacking and how better I can do. And this session was much needed. I didn't I didn't think initially that it would be this much important. We all know that communication is the core of how we do, and my core job is communicating everything here and there. Being in HR, I have attended a lot of trainings, but experience with Samad was quite different in a way that he literally made everyone be engaged in the training. I didn't see anyone जो थोड़ी देर के लिए भी थोड़ा divert हुआ हो training से. Everybody was literally engaged. मैंने कई वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स कंपनी के थ्रू लिए. इनफैक्ट ये जो ट्रेनिंग है इस वेरी इंफॉर्मेटिव ड्यू टू कि हम बहुत सारी जगहों पर अपने आप में गैप, जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो हमेशा रहता है, और हमने आज महसूस किया वाकई कि बहुत अहम है इस चीज़ को टेकअप करना और इस गैप को. इससे पहले बहुत सारी ट्रेनिंग हुई हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग आज समझ के साथ हमने कंडक्ट की है. ये बहुत ही मेरे लिए फ्रूटफुल रही, और इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं. बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट आर्टिकल सुनने को मिले हैं जो इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखे थे या पढ़े थे. सबसे मेन जो है दैट इज़ अबाउट द सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल्स, और इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस.